Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum. Welcome to Kids Planet with Urwa, where we think together, explore the universe, and most of all, enjoy learning. हम साइंस वर्ल्ड के टेल ऑफ द यूनिवर्स पे थे. We were on Unit 2. We have started the third topic. आपने Alexander Friedman Model का हमें पता चल चुका है. Now we'll be doing the first subtopic of this topic, and this will be the last subtopic of this unit, which is Friedman Model and Modern Universe Model. So हमने previously जो है अपनी वीडियो में पढ़े थे about three types of models of Friedman. There were three. अब हम उसी से आगे बात कंटिन्यू करेंगे, जो कि ये है कि उनमें से जो मॉडल्स हमने पढ़े थे उनमें से जो सबसे प्रैक्टिकल है और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल सिचुएशन रिप्रेजेंट करता है वो डिपेंडेंट है ऑन द रेट ऑफ एक्सपेंशन और द डेंसिटी ऑफ मैटर इन आवर यूनिवर्स. अगर डेंसिटी लेस है देन अ क्रिटिकल वैल्यू डिटरमिन्ड बाय द रेट ऑफ एक्सपेंशन. ये जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है इट विल बी टू वीक टू हॉल्ट द एक्सपेंशन. अगर डेंसिटी greater than the critical value, gravity will stop the expansion at some time in the future, and that will be the reason for the universe to collapse. Because हमने अभी तक ये डिस्कवर नहीं किया था मैटर ऑफ द यूनिवर्स, आई फील हेल्पलेस टू आर्ग्यू कि कौन सा मॉडल बेयर करता है ज़्यादा प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस. लेकिन आई थिंक आई शुड इंक्लूड वन ऑफ माई फेवरेट साइंटिस्ट ऑथर स्टीफन हॉकिंग्स thoughts on this regard. He wrote this in his book A Brief History of Time, chapter 3, कि हम determine कर सकते हैं the present rate of the expansion by measuring the velocities at which other galaxies are moving away, और हम ये कर सकते हैं by using the Doppler effect. ये काफ़ी एक्यूरेटली किया जा सकता है, लेकिन जो डिस्टेंस है ऑफ द गैलेक्सीज वो इतने वेरी वेल नोन नहीं है बिकॉज हम इनको सिर्फ इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं. सो ऑल वी नो इज दैट द यूनिवर्स एक्सपैंड करी है बाय बिटवीन 5% एंड 10% एवरी 1000 मिलियन ईयर्स. हाउएवर हमारी जो अनसर्टेनिटी है अबाउट द प्रेजेंट एवरेज डेंसिटी ऑफ द यूनिवर्स वो इज इवन ग्रेटर. So if we add up to the masses of all the stars that we can see in our galaxy and other galaxies, जो total है it is less than 1/100th of the amount required to halt the expansion of the universe. Even के जो lowest estimate है उस rate of expansion के लिए. हमारी जो गैलेक्सी और बाकी गैलेक्सीज हैं however they must contain a large amount of dark matter, जो कि हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, बट उसका हमें ये पता है कि इट इज़ देयर बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन द ऑर्बिट्स ऑफ स्टार्स गैलेक्सीज में जो है. मोर ओवर ज़्यादातर गैलेक्सीज इन वो क्लस्टर्स में फाउंड है और वी कैन सिमिलरली इन्फर कि जो प्रेजेंस ऑफ येट मोर डार्क मैटर इन बिटवीन द गैलेक्सीज इन दीज क्लस्टर्स बाय इट्स इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ गैलेक्सीज. जब हम एड अप करते हैं all this dark matter, we get only about 1/10 of the amount required to halt this expansion. However, हम कभी भी exclude नहीं कर सकते the possibility कि कोई और form of matter भी होगी जो distributed होगी almost uniformly throughout the universe, जो कि हमने अब तक detect नहीं की और that वो might still raise कर सकेगी the average density of the universe up to the critical value needed to halt the expansion. ये जो present evidence है therefore ये suggest करती है कि the universe will probably expand forever. बट ऑल हम जो इसके बारे में हम खुद really sure हो सकते हैं कि even if the universe is going to recollapse, ये इतनी जल्दी नहीं होगी. इट माइट डू एटलीस्ट आफ्टर 10,000 मिलियन ईयर्स, क्योंकि इट इज ऑलरेडी बीन एक्सपैंडिंग फॉर दैट लॉन्ग. दिस शुड नॉट अनडरली वरी अस, क्योंकि एट दैट टाइम अनलेस वी हैव कॉलोनाइज्ड बियॉन्ड द सोलर सिस्टम, मैनकाइंड खत्म हो चुकी होगी एंड वी वुड हैव डाइड आउट. ये जो ऑल सी एक्सप्लेनेशन है फ्राइडमैन मॉडल की, ये रिवील करती हैं कि एट सम टाइम इन द पास्ट जो डिस्टेंस होगा बिटवीन नेबरिंग गैलेक्सीज वो कहीं ना कहीं जीरो हुआ होगा. एट दैट टाइम जो हम बिग बैंग कहते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द यूनिवर्स would have been zero with an infinite density. So
Before I end this video, this is what I would like to show. इसके बारे में हमने previously भी सीखा था, but I would like to include it again, that what Stephen Hawking said is that the open universe is the most practical situation of our universe. So that's all for today. Thank you.